Welcome dear students of +2 first year economics. Today's topic is a function of statistics. In my previous class we have already covered 5 points about the various functions of statistics. Now the 6th point is individual knowledge. Statistical methods improves the thinking, knowledge and reasoning of an individual, which enables to solve problems in every sphere of life. So, the individual knowledge is gained with the help of statistical methods. The individual will be empowered to get better IQ and reasoning with the help of statistical methods and to solve the various problems in every sphere of life. So, it is one of the function, that is individual knowledge. The next point, 7th point, is trend and behavior. The trend and direction of a behavior of a data often requires in formulation of policies. The statistical methods like regression, time series, index number, interpolation, etc. help to estimate the trend data. The future data is to be predicted with the various statistical models like regression. In regression analysis, the future data is estimated. So, we can say estimated data is helpful to solve the various problems. So, there are several statistical measures like index number. So, the trend values can be estimated with the help of index number like a cost of living index, wholesale price index, so price, general price level, so etc. helps the trend behavior and estimate the data. So, it is one of the important function of statistics. The next point is classification. Data is to be classified. So, in a statistical process of dividing data into different groups according to the homogeneous characteristics. So, data should be in homogeneous nature, that we have already discussed. So, unless homogeneous data, it is not possible for comparison. गत क्लास रे आमे गत क्लास रे कहिथिले जे गोटे लोकर उच्चता एवं गोटे गछर उच्चता र कोन सामंजस्य नाही, तेणु द हाइट ऑफ ए मेल and height of a female, that can be correlated. So, we can classify the data into groups according to the homogeneous characteristics. So, it helps in comparison and interpretation of various features of data. So, it is one of the important function. परिसंख्यान यह एक अन्यतम कार्य. So, next point is measurement of uncertainty. So, in every field of social science there are many facts which have uncertainty. The study of a probability helps to measure uncertainty and makes future plans and policies. कितने तथ्य अच्छी जो तथ्य की uncertainty अनिश्चितता भीतर रही कितने probable value estimation. So, that helps to measure the and formulate the various plans and policies of different sectors. तो uncertainty जो आमे कहूचे अनिश्चितता जो प्रत्येक तथ्य को आमे एनालिसिस कले ताहा एक हमको सिद्धांत रे पहुंचाउछ जोड़ कि आमे केते गुडी माने नीति निर्धारण करि पाउछे एवं
भविष्यत रे जो योजना आ भविष्यतर विभिन्न सिद्धांत रे पहुँच पाउछे एवं गवर्नमेंट विल टेक द हेल्प ऑफ द वेरियस data for making and formulating the various plans and policies. So, it is immensely needed by every field of activity. Inferences and conclusions. Statistical methods help to draw inferences based on collected data and analyzed. The various inferences, the various policy decisions will be decided with the help of statistical analysis and classifications. If data will not be properly arranged, will not be properly classified, will not be properly analyzed, we will not be able to reach in a better conclusion or in a better and logical conclusion. So, कौन से एक सिद्धांत रे पहुँचवा को हेले आमे तथ्यर उपस्थापना, तथ्यर विश्लेषण, तथ्यर जो सविशेष विवरणी यदि आमे ताकू न करिबा ताहले आमे निश्चित भाव रे पूर्णांग सिद्धांत रे पहुँच परिबा नाही। इठी हमरो कहर अछि जे कनक्लूजन होची कौन सी नीति निर्धारण कौन सिद्धांत रे पहुँचवा को हेले हमर डाटा रो सविशेष माने एनालाइज करिबा आवश्यकता अछि। So, these are the various functions of statistics. So, next come to importance of statistics. Statistics play a very dominant role in every field of science. In all economic activities, statistics has immense scope to decide various future decisions. So, now we will go one by one. आमे गोटे पर गोटे डिस्कशन करिबा how statistics helps in different economic activities. Number one is statistics and administration. The statistical tools help the government to formulate various policies like income, consumption, expenditure, population, saving and investment. Different policies, how the national income will be increased, how consumption expenditure will be increased, how population growth will be reduced, what will be the impact of saving and investment in the development of a country, etc. The statistical information helps the government to formulate the various policy decisions in the various respects. This is one of the important परिसंख्यान गुरुत्व परिसंख्यान आवश्यकता अछि प्रत्येक क्षेत्र रे परिसंख्यान आवश्यकता अछि. The second one is statistics and business management. So, it has immense importance in business and management. In business there is a ups and downs, there is a trade cycle, upswing and downswing in the business activity. व्यवसाय केते बेले लाभ होउची केते क्षति होउची तो ये सब को जानिबा को हेले आमे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन गैदर करिया पड़िबो लाभ क्षति र हिसाब. तो बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ बिजनेस एनवायरनमेंट विल बी कंजेनियल. So, statistical information is to be needed for taking various decision in the development of business activities. After all, it is a managerial science. So, managerial science helps to manage the various things in a better and in a very scientific manner. तो ये हूँ जदि आम मैनेजमेंट साइंस देखा ताले सेठी हमरो तथ्य दरकार, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन दरकार. बिना स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रे कौन से आम मैनेजमेंट साइंस को आम बेटर करि परिबा नाही. तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल.
सपोज गोटे फार्मर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो अच्छे फार्म प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, सो these are the various aspects. So, how it will be better managed, production management, marketing management, then financial management, etc. So, it is possible with the help of statistical analysis. तथ्यर विश्लेषण माध्यम आमे विभिन्न क्षेत्र में आमे सुपरिचालन करि परिबा। तो इठे होची विभिन्न क्षेत्र में यदि आमर बेटर मैनेजमेंट करिबा ताले इठी स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन रो आवश्यकता रही। द नेक्स्ट पॉइंट इज statistics and social reforms. It also plays an important role in analyzing various social and economic problems like poverty, dowry system, unemployment by making proper plans to eradicate them. Statistics gathers the information about these activities. Suppose poverty केते लोक अछंती बिलो पोवर्टी लाइन रो अछंती, केते लोकंकर इकोनॉमिक जो लेवल इनकम लेवल बढ़ी छी, सो दैट वी कैन गेस फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल इनफॉरमेशन. दाउरी सिस्टम, दाउरी द्वारा केते केते लोक मृत्युवरण करुछंती, पीड़ित होउछंती, अनएम्प्लॉयमेंट रेट केते अछि, ए सब आमर देशर प्रगति माने आमर बढ़ुची, प्रगति उन्नति होउची ना हो नाही. सो दैट वी कैन कलेक्ट द इनफॉरमेशन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल हेड्स. जदि आमे परिसंख्यान माध्यम न जानिबा आमे कहि पारिबानी आमर प्रगति होउची, सामाजिक स्थिति भल अछि कि खराब अछि. सामाजिक स्थिति केते भल रहइबो जदि आम देश रे पॉवर्टी कमिबो, दाउरी सिस्टम रे केही मृत्युवरण करिवे नाही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कमिबो एवं अन्यान्य क्षेत्र में विकास होबो, ताहले आमर सामाजिक विकास हेले आम देशर प्रगति होउची बोली आमे कहि परिबा. सो कंट्री विल डेवलप इफ देयर विल बी डेवलपमेंट इन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड. ताले जदि सामाजिक राजनीतिक अर्थनैतिक क्षेत्र में विकास हुए ताले देशर प्रगति हो परिबो. सो स्टैटिस्टिक्स गिव द बेटर इन्फॉर्मेशन फॉर taking the future plans to mitigate the socio-economic problems of an economic activity. कौन सी देशर अर्थनैतिक सामाजिक क्षेत्र में जदि विकास आने को चाहिबा ताहले आमको तथ्यर आवश्यकता रही. जदि तथ्य संग्रह करिबा ताले आमर निश्चित भाव में आमे विकास रो धारा रे पहुँची परिबा, विकास स्रोत रे पहुँची परिबा एवं देश प्रगति पक्ष आगे जाई परिबो. सो वी कैन मार्च अहेड. एंड लास्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग. द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स इकोनॉमिक प्लानिंग. सो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द वेरियस long term plans is to be adopted like poverty alleviation, removal of unemployment. So these are basic things, these basic problems to be solved by means of economic planning. देशर दारिद्र्यता बेकार समस्या को प्रत्येक दूर करने को हेले हमको प्रत्येक योजना रे यही लक्ष्य रखा पड़ो. देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि हो पारिबो, जीडीपी रेट बढ़ाया पड़ो. जदि आम जीडीपी रेट केते अछि न जानिबा ताले आमे केमिति प्रोजेक्ट करिबा फ्यूचर जीडीपी रेट बढ़िबो. तो आमको प्लान करिया पड़ो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डाटा. पूर्व तथ्य अनुसार आमको फ्यूचर प्लान करिया पड़ो. तो फ्यूचर प्लान पई आमको अर्थनैतिक योजना करिया पड़ो. तो अर्थनैतिक योजना माध्यम रे आमे अनेक जिनस आमे ताकू माने सॉल्व करि परिबा. Then comes statistics and economics. Next point, statistics and economics. Statistics plays an integral part in economics. In each and every work of economics, statistics helps to take various decisions by formulation of statistical methods or tools. Economics is very important from day to day life of the people.
So, economic theory is being tested by the help of statistical analysis. How the economics is helpful to the man in every sphere of life. So, statistics has a great role to play in every branch of science. So, various statistical tools are to be implemented to test the economic theory. अर्थनैतिक कौन सिद्धांत रे पहुँचवा को हेले आमको परिसंख्यान साहाय्य ना पड़ो. It has immense importance in the field of economics. Next point, statistics and research. Research and development are integral part of economic progress of a country. Statistical methods help in research and development. Research and development is a very scientific term. तो इठी हमको कौन सी जिनस को सिद्धांत रे पहुँचा को हमको रिसर्च करिया पड़िबो. गवेषणा डेवलपमेंट गवेषणा को आउ आम केमती डेवलपमेंट इन मोर साइंटिफिक मैनर विकास जदि कथा आम कहूचे जदि आम देशर उन्नति कथा कहूचे ताले बेटर एंड साइंटिफिक वे रे आम केमती माने डेवलपमेंट करि परिबा. विथ लेस मैन पावर we can reap better result. आमको कम खर्च रे अधिक केमती आमे डेवलपमेंट करि परिबा. So, different models are to be adopted. So, research and development is very important in statistical analysis. So, statistics gives the clues for the various problems arising in the economy and helps the planners and policy makers to take the various decisions and to solve it. केते गुडे जिनस समस्या जानिले ताको समाधान करिया पई आमे चेष्टा करिबा. जदि समस्या नाही सॉल्व करिया कि आवश्यक नाही तो समस्या जोटी अछि ताको आमे सॉल्व करिया पई बाट खाड़िबा. तेणु स्टैटिस्टिक्स रो इनफॉरमेशन द्वारा आमे अनेक समस्या को जानिबा को पाउचे. जो समस्या को विभिन्न योजना विभिन्न जो निष्पत्ति माध्यम रे आमे ताकू सॉल्व करिया पई प्रचेष्टा करछे. से प्राइवेट सेक्टर हो से गवर्नमेंट सेक्टर हो प्रत्येक सेक्टर रे आर रोल मध्य अछि आर भूमिका अछि. तेणु सेति पई आमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट उपरे स्ट्रेस दा पड़ियो गुरुत्व दा पड़ियो. नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. द डिपॉजिट्स loans of banks, insurance premium calculations and growth performance of banking and insurance sector is estimated by statistical methods and techniques. Though different calculations in the banking and insurance sector is formulated by means of statistical tools, by means of statistical techniques. आज आम जो देखुचे सेविंग रेट बढ़ुची कि कमुची डिपोजिट बढ़ला कि कमिला बैंक रो ट्रांजैक्शन अभी ऑनलाइन सिस्टम है. जो ऑनलाइन सिस्टम रे आम जानी पार्चे आमर केते परफॉर्मेंस है. दैट इज अ सिस्टम दैट इज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स. सो दैट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स गिव्स द information and it also helps to take the various policy decisions. So, premium calculations in insurance sector, life insurance, general insurance sector जदि आमे प्रीमियम कैलकुलेशन करिबा आमर गोटे प्रीमियम कहले जो गोटे आमे गोटे दउचे इंस्टॉलमेंट दउचे कौन सी आमर लाइफ इंश्योरेंस और एनी एक्सेप्ट लाइफ अदर इंश्योरेंस आर देयर तो आमको केते प्रीमियम देवा पड़िबो. दैट कैलकुलेशंस इज to be estimated with the help of statistical techniques. यह द्वारा परिसंख्यान जो रही
विभिन्न टेक्निक्स ताकू व्यवहार करी आमे अनेक बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर बीमा हो बैंक व्यवस्था हो आमे अनेक निष्पत्ति ग्रहण करि पाउछे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स एंड मेडिकल साइंस एंड एजुकेशन। तो इठी मेडिकल साइंस मध्ये स्टैटिस्टिक्स रो गुरुत्व रही जेमति कि आमे कहू लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट एवरेज लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू लिव बाय पर्सन गोटे लोक केते दिन बंचुची बंची रहिबार आयु जो आमे कहू केते दिन बंचुची दैट एस्टिमेशन is done by the help of statistical tool। reproductive power तो reproductive power हमरो बढ़ी ना कमी माने को other factors how it affects that we can study from statistical tools। health, mortality rate, infant mortality rate, birth rate, death rate, so these calculations are the part of statistical analysis। आमे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जानी परिबा जे बर्तमान बर्थ रेट डेथ रेट कम बढ़ी ना कमी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट रिप्रोडक्टिव पावर हेल्थ रो जो सेक्टर डेवलप करूँ ना नहीं ये सब आमे जानी परिबा स्टैटिस्टिकल टूल्स माध्यम रे बा परिसंख्यान रो विभिन्न जो नीति माध्यम रे जानी परिबा। द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ मेडिसिन्स आर आल्सो डिटरमिन्ड बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गोटे मेडिसिन सेटा प्रॉपर्ली फंक्शन कला कि नहीं कहीं ना सेटा केते लोक सक्सेस हेले दैट इज न्यूमेरिकल इनफॉरमेशन केते लोक फेल्योर हेले गोटे मेडिसिन रो एप्लीकेशन केते लोक फेल्योर हेले दैट इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड गोटे ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट रे केते लोक लाइक करछंती आ केते लोक डिसलाइक करछंती दैट is also estimated by survey method। So these methods are out of statistical analysis। So it helps the researchers to take various policy decisions। So it is one of the importance। So statistics play a very important role from day to day life of the people। Then come to we have to discuss about distrust statistics। Statistics depends upon trustworthiness कारण कौन सी इनफॉरमेशन जिते आम कलेक्ट करुचे तापर विश्वास रहा दरकार ताले अविश्वास कौटी होची संशय कौटी आसुची संशय कहीं आसुची तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स refers to the lack of confidence in statistical data। So the improper use of statistical methods result in distrust statistics। जो मेथड प्रॉपर मेथड जदि आम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज न करिबा ताले आमे जो रिजल्ट पाइबा से रिजल्ट ठीक आसीबो नाही। इट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट्स, it will give misleading results, misleading conclusions। So public lose their trust, belief and confidence in statistics। लोक माने यार कोन कॉन्फिडेंस रहबनी लोक मानकर विश्वास रहबनी कारण इट डिपेंड्स ऑन फेथ। जदि कॉन्फिडेंस नहला तापर विश्वास टूटी गला ताले लोक मानकर माने गवर्नमेंट ऊपर विश्वास रहबनी काहे जदि डाटा रंग आसे। रिसेंटली माने तुम जानी थी ये कोरोना समय रे केते लोक मरीगले ता डाटा दी प्रकार डाटा आसला बेलू लोक कन्फ्यूज हो गले। पेपर बाहर गोटे प्रकार डिपार्टमेंट रे बाहर गोटे प्रकार डाटा पेपर गोटे प्रकार दौची डिपार्टमेंट रे आगु डाटा होची। सो दैट फैक्चुअल प्रॉब्लम अरेज कहीं करची। सो कोऑर्डिनेशन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज टू बी अडॉप्टेड। सो डाटा should be collected properly without any casualness। तेणुक जिते आम डाटा कलेक्शन करुचे आमर ता भीतर रहा दरकार निश्चित भाव में माने माने गोटे कॉन्फिडेंस रहा दरकार। जो कॉन्फिडेंसटा आम रखा लोक मैंने से कॉन्फिडेंस रखिए। द इन्फरेन्सेस एंड कंक्लूजन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल।
जदि आम से आम भितर ठीक न रखा लोक मानकर आपरे आस्था तुटी कॉन्फिडेंस तुटी डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स that we have already discussed. So, public will lose their confidence if the data will not have trustworthiness. कारण कौन सी तथ्य जदि लोक मानकर शुद्धता न लोक माने जदि तांका ऊपर शुद्धता न रहे ताहले कौन सी आमे सिद्धांत रे पहुँची परिबा नाही तेणु पब्लिक लूज देयर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस स्टैटिस्टिक्स जदि कौन सी तथ्य भूल भाल हैला बा संशय सृष्टि हैला कलेक्शन हो माध्यम रे हो किबा इंटरप्रिटेशन माध्यम रे हो किबा एनालिसिस माध्यम रे हो कौन सी डिफेक्ट अराइज कला कौन सी असुविधा आसला समस्या आसला ता लोक मानक रो जो परिसंख्यान उपरे ताकर विश्वास तुटी जीवो एक्जेक्टली द इन्फरेंसेस द कंक्लूजन्स विल आल्सो बी रॉन्ग जो उपसंहार बा जो सिद्धांत ता भी भूल हो तो ये जो परिसंख्यान जो संशय सृष्टि होची बा डिस्ट्रस होची व्हाट आर द रीजन्स को कारण ये समस्या अरेज कर तो देयर आर सेवरल रीजन्स in which the people will lose confidence on statistics. So, causes of distrust statistics, number one, simplicity of data. The distrust statistics arises due to easy confidence on statistical data. कौन सी तथ्य जदि इजिली आम कह कलेक्ट करवा जदि आम टिके लॉट ऑफ केयर न नवा ताले सेटा भूल हो सो lot of precaution is to be undertaken while collecting the information or data. जब हम तथ्य संग्रह करछे सेतल जदि आमे टिके सतर्कता सहित संग्रह न करिबा कैजुअली करिबा बा इजी एक्सेस करिबा ताले एटा भूल हबो निश्चित तथ्य संग्रह रे किछि संशय सृष्टि हबो. The second point is the second reason is that is change in definitions. चेंज इन डेफिनेशंस अर्थ होची जदि आम जो लक्ष्य रखी आम तथ्य संग्रह करछे जदि तार माने एटीट्यूड चेंज हैला तार डेफिनेशन तार जो रहिला ऑब्जेक्टिव चेंज हैला ताहले तथ्य मधे भूल हो जो पर्पस इन व्हिच डाटा इज टू बी कलेक्टेड जदि आम कौन सी पॉवर्टी ऊपर तथ्य संग्रह करछे ताले से लाइन न करी जदि आम प्रोडक्शन डाटा कलेक्शन करबा ताहले सेटा किछि काम रे आसीबो नाही. द पर्पस of enquiry should be specific. से enquiry specific हो दरकार. The rules, the words or definitions must be used and applied properly. जो definition हमें कहूचे जो rules follow up करूचे सेटा ठीक हो दरकार. Then any change in definition creates statistical distrust. यदि हमें कौन सी statistical rules को यदि फॉलोअप न करिबा ताले जो परिसंख्यान रे संशय अरेज करिवो. तो अनदर रीजन इज डेलिबरेट मिसयूज माने मैनिपुलेटेड दैट मीन्स डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स अकर्स ड्यू टू डेलिबरेट मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय द पीपल. डेलिबरेटली आम तथ्य संग्रह करिबा जदि आमे जानि सुनि कि से जगह को न जिबा रेस्पोंडेंट पाखु न जिबा आमे जदि गोटी जगह रे बसी कि आमे फिलअप करिकी डाटा संग्रह करवा सेटा दैट विल नॉट बी ट्रस्टेबल से आम विश्वास योग्य हेनी से फैक्चुअल एरर अराइज करिवो ठीक आम तथ्य पाई परिबा नाही एवं जो तथ्य पाइबा ताहा आम सठिक कार्य रे व्यवहार परिबो नाही. तेणु डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स मे आल्सो अराइज ड्यू टू डेलिबरेट मिसयूज आमे जानि सुनि कि गोटे भूल करवा माने जोडा कि आमे मिसयूज करवा जहाँद्वारा कि आमर परिसंख्यान संशय अराइज करिवो. देन कम टू अनदर कजेस इज दैट इज पार्शियल डाटा partial instead of comprehensive it leads to wrong conclusions and inferences. Partial data, so data should be collected in detail in comprehensive manner.
जदि आम पार्टली डाटा कलेक्शन करवा हाफाजली करवा जी आवश्यकता तथ्य संग्रह करार अच्छी से न करी पार्टली करवा दैट विल नॉट गिव द बेस्ट रिजल्ट आमको ये ठीक रिजल्ट दे पारिबो नाही कौन से आमर इन्फरेन्सेस आम ड्र कर ठीक से तेणु ये हूँ पार्शियल डाटा लीड्स टू डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स परिसंख्यान संशय सृष्टि हे देन कम टू रॉन्ग एप्लीकेशन wrong application means any statistical method are applied wrongly leads to distrust statistics. Statistical method, proper statistical method is to be followed. Failing which it will lead to distrust statistics. जो तथ्य आमे को एनालाइज करिबा proper statistical tool is to be used for giving better result for माने फॉर गेटिंग लॉजिकल कंक्लूजन्स ताले आमे कौन सी निर्दिष्ट सिद्धांत रे पहुँचवा को हेले आमको प्रति माने स्टैटिस्टिकल टूल प्रॉपर टूल इज टू बी यूज्ड देन कम टू ऑल टाइप्स ऑफ केयर शुड बी अंडरटेकन व्हाइल द कलेक्शन ऑफ डाटा तो जिते हम डाटा कलेक्शन करछे माने केयर न पड़िबो फेलिंग व्हिच it will lead to distrust statistics. Then another reason is that is arithmetical error. जो arithmetical error गणितिक जो रही भूल भटका रही so it may also arise distrust statistics. So that may be printing mistake, error in number, प्रिंटिंग मिस्टेक जदि कौन से हम डाटा कलेक्शन सेकेंड डाटा कलेक्शन करछे प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी जदि आम से ठीक है वेरीफाई न करवा से डाटा नहीं आसवा से डिस्ट्रस्ट स्टैटिस्टिक्स आसो जदि आम जो एरिथमेटिक मिस्टेक रही कैलकुलेशन कुछ भूल अच्छी आम को ठीक कलेक्शन न करवा ताहले इट विल गिव फॉल्टी रिजल्ट ताहले यह अर्थ माने परिसंख्यान रे एक संशय सृष्टि हेबो तो व्हाट केयर इज टू बी अंडरटेकन what precautions are to be adopted to remove distrust statistics. So several steps are to be followed to remove distrust in statistics. संशय दूर करबा पाई परिसंख्यान जो संशय रही दूर करबा पाई केते गुडी हमको पदक्षेप नवा पड़िबो तो प्रथम पदक्षेप विषय हम कहिबा all the limitations of statistics must be kept in mind while using statistics. जो लिमिटेशन व्यतिक्रम अच्छी परिसंख्यान अनेक व्यतिक्रम आमे कहिथिले से व्यतिक्रम गुडी को जदि आमे माने टिके दृष्टि दबा ताहले परिसंख्यान जो संशय ताहा सृष्टि होबो नाही तो distrust statistics will be removed when the limitation statistics are to be followed. So it is one of the important point is to be kept in mind to remove distrust statistics. So number 2, all primary and second data must be used after careful enquiry. जो हमें डाटा कलेक्शन करछे प्राइमरी डाटा एवं सेकेंड डाटा प्राइमरी डाटा मीन्स प्राइमरी सोर्स इंटरनल सोर्स जोटी कि हमें रॉ डाटा बोली कहूचे दैट शुड बी माने फर्निश्ड प्रॉपर्ली ताकू जदि हमें यूज करबा ताकू जदि हमें व्यवहार ठीक करबा इनक्वायरी ठीक करबा बा सेकेंड डाटा कलेक्शन बेले यदि आमे इनक्वायरी प्रॉपर्ली करबा ताहले ए जो रही परिसंख्यान संशय ता निश्चित भाव दूर हो पारिबो सो ऑल प्राइमरी एंड सेकेंड डाटा मस्ट बी यूज्ड आफ्टर केयरफुली इनक्वायरी द थर्ड स्टेप इज दैट द स्टैटिस्टिशियंस and researchers should use the data and the proper care is to be adopted while using the collected information and taking various statistical tools. जदि आमे जो statistical tools अच्छी proper tool जदि यूज न करिबा ताहले आमे भल रिजल्ट पाई परिबा नाही एवं जो statistical जो अच्छी संशय ता सृष्टि हेबो जदि आमको मुझे तुमको गोटे कथा कहबी पे मान जदि आम कौन से परसेंटेज कथा कहूचे स्पीडी कथा कहूचे परसेंटेज ऑफ स्पीडी दुईटा वेहिकल चलुची तार स्पीडी आम मेजरमेंट करवा दुईटा माने वेहिकल जाउची तार स्पीडी केते अछि एवरेज स्पीडी
तो एवरेज स्पीड मन कर गोटे गाड़ी जाऊँगी 60 स्पीड रे आउ गोटे गाड़ी होची 80 स्पीड रे तो आम दुईटा को मिसई दुई डिवाइड कले दैट विल गिव फॉल्ट रिजल्ट कहीं ना ये हूँ एवरेज 2 हम ना ये हूँ दैट इज रेसिप माने दैट इज रेसिप्रोकल जो आम कहे जो हार्मोनिक मीन तो हार्मोनिक मीन इज द बेस्ट रिजल्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल से आम एरिथमेटिक मीन यूज कले दैट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट so harmonic mean is to be followed. So in case of percentages and ratios geometric mean is to be adopted geometric mean. So there are certain statistical models which will be appropriate statistical models is to be adopted to remove distorted statistics. And lastly there should be free and frank discussion of the investigator while collecting the information. The investigator should be free and frank to discuss with the respondent जाठू तथ्य संग्रह करुच्ची free and frank how to collect the information, how the respondent will give the information. The investigator should be conscious, should be aware and should motivate the respondent and give stress on the purpose of the collection of data. जदि जो लोक तथ्य संग्रह करछे तार से पर्पस न जानी पारिबो से ठीक तथ्य दब नाही भूल तथ्य दब कारण मु जदि सपोज आई एम एन इन्वेस्टिगेटर आई वांट टू कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव टू aware that respondent about the purpose of data collection, then he or she is able to furnish the information correctly. तो आमे जो लोक ठारू तथ्य आनिबा तथ्यर जो रही आवश्यकता कौन पे आमे तथ्य कलेक्शन करछे ताहा रेस्पोंडेंट जानिबा आवश्यक जदि से जानिबो ताहले से ठीक तथ्य देबो. सो द इन्वेस्टिगेटर शुड बी फ्री एंड फ्रैंक to discuss all things in detail to the respondent for collecting information. Okay. So data collection is very very important for taking policy decisions, and it will be helpful the researcher, analyst, government and all the people who need the data. तो जो रिसर्च करछंती समान को डाटा आवश्यकता रही सरकार डाटा दरकार लोक मान जे माने चाहूँगी किसी डेवलपमेंट करने से और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से चाहूँगी. तो तथ्य नहले आमे कौन सी जिनस माने कौन जो पदक्षेप नहीं पारिबा नहीं देशर प्रगति क्षेत्र में कौन से स्टेप नहीं पारिबा नहीं. तेणु डाटा कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट collection of data, statistical information. So that is statistical information or statistical data. So data are defined as numerical statement of aggregates. A single data is not called at all statistics. मो जनकर इनकम चाहूँ जनकर इनकम है एति तार मोर से इनकम कौन माने अच्छी गोटे पिलार मार्क अच्छी माने 60 in a single subject. So no need at all. तो it is that we have already discussed. आमे ए विषय आमे आलोचना करछे कारण स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. तो इट इज द एग्रीगेट्स न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ एग्रीगेट्स. द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा. डाटा शुड बी एक्यूरेट, डाटा शुड बी रिलायबल. सो जदि हम फेक डाटा आनिबा दैट विल नॉट फुलफिल आवर पर्पस. हेंस डाटा play a very important role in statistics. So data जो रही very important role to play. कारण जदि आमर कौन सी लक्ष्य अच्छी जे आम किसी विकास कथा चिंता करछे बा डेवलपमेंट कथा चिंता करछे ताहले हमको तथ्य ठीक तथ्य ले आमे निश्चित भाव में आमे सक्सेस हवा. कारण अनेक जिनस अनेक प्लान्स एंड प्रोग्राम सक्सेस हो ना एई तथ्य भूल भटका कर दौरान. गवर्नमेंट बहुत डेवलपमेंट करुच्ची पॉवर्टी एलिवेशन करुच्ची देखला बेलू पॉवर्टी कहीं कमु ना कारण जो मैंने रही बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से कौन
आम रंग इनफॉरमेशन पाऊँ माने मैनिपुलेटेड डाटा सो माने गत वर्ष जदि थिले एतिकी ए वर्ष केमती बढ़िबे केमती बढ़िया चांस नहीं जेते गवर्नमेंट डेवलपमेंट काम करूँ कमिबा कथा तो रंग इनफॉरमेशन आसूची मैनिपुलेटेड है डाटा तो व्हेन डाटा आर मैनिपुलेटेड so it will not fulfill the purpose of development. So the statistical investigator should be aware about the accuracy of the data to be collected from the respondent. Hence statistics play very important role for the researchers and policy makers by adopting the statistical tool, that is one of the collection of data statistical tool. Okay, dear students, so collection of data is one of the statistical tool for making various decisions by the policy makers. तो जितेबाला कौन सी माने नीति निर्धारणकारी बा योजनाबद्धकारी जो माने रही विभिन्न क्षेत्र में कौन सी सिद्धांत पहुँचा चाहते ताले आमको शुद्ध तथ्यर आवश्यकता रही सो शुद्ध तथ्य आसो कौटू तो व्हाट आर द सोर्सेस इन व्हिच डाटा टू बी कलेक्टेड डाटा आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली or indirectly, internally or externally. So it may be primary or secondary one. So what are the internal sources? So internal sources means the data which are collected from internal reports of an organization. So internal sources means कौन सी ऑफिस रो नथी पत्र हो बा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रो रिपोर्ट हो जदि सेतु किछि आमे तथ्य संग्रह करू ताहा होछि इंटरनल सोर्स. सपोज राउरकेला स्टील प्लांट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन waste profit loss is an example of a internal source of data. So steel plant will not publish when the investigator goes to that organization and collects the numerical information from the records, from their reports, from their files, from the records. So that is called internal source. So internal source is in secret, से गोपनीयता रहे कौन से पब्लिश हुए नहीं जड़े रिसर्चर तार आवश्यकता थिबारु से ऑर्गेनाइजेशन जीवो एवं से रिक्वेस्ट करिवो जे मोर एई तथ्य एई पर्पस पे दरकार देन दैट ऑर्गेनाइजेशन will provide such and such information. तेणु यहाँ को आम कहे इंटरनल सोर्स यहाँ हूँ आभ्यंतर उत्स आभ्यंतरीण माने विदिन द ऑर्गेनाइजेशन such and such information are available within that organization. So आभ्यंतरीण ता भीतर अच्छी बाहर को जाए नहीं बाहर कौन सी पब्लिश हो नहीं. The second is external sources, the information collected from outside agencies like periodicals, magazines, handbook, government periodicals, government और जो handbook रही is an example of external source of data. तो जोड़ी आम कह पब्लिश हो तो विभिन्न मैगजीन रोचे बा न्यूज पेपर होची ये सब आम एक्सटर्नल सोर्स पाचे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स. इंटरनल सोर्स इज प्राइमरी सोर्स. सो इटी हूँ आभ्यंतरण क्षेत्र आम तथ्य संग्रह करुचे आ बाह्य क्षेत्र आम तथ्य संग्रह करुचे. डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड अगेन दैट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. दैट मे बी प्राइमरी सोर्स इज प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. सो प्राथमिक तथ्य जोड़ी कि आम कहे प्रत्यक्ष तथ्य जोड़ी कि परोक्ष तथ्य जोड़ा माध्यमिक बोली कहे प्राइमरी डाटा. सो प्राइमरी डाटा आर डिफाइंड एज डाटा व्हिच आर ओरिजिनली कलेक्टेड ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन. कौन सी अनुसंधान समय प्रथम जो तथ्य संग्रह करा जाए ता होचे
प्रत्यक्ष तथ्य दे आर द इनफॉरमेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट जो अनुसंधानकारी प्रत्यक्ष भाव में जो रेस्पोंडेंट ठारू तथ्य संग्रह करे दैट इज ओरिजिनल कैरेक्टर मान जोटा कि ओरिजिनल रॉ डाटा इट इज नॉट फर्निश्ड इट इज रॉ डाटा इट इज फास्ट हैंड इनफॉरमेशन जो तथ्य आम प्रथम संग्रह कले ताहा होची प्राइमरी डाटा सो प्राइमरी डाटा एग्जांपल होची पॉपुलेशन सेंसस वन ऑफ द एग्जांपल जेतले देशर जो जनसंख्या में संग्रह करछे डोर टू डोर जो सेंसर एनुमरेशन कंप्लीट एनुमरेशन तथ्य संग्रहकारी प्रत्येक घर को जाई तथ्य संग्रह करिवो फ्रॉम डोर टू डोर ताहा से तथ्यटा पुणी प्रोसेस होगी पुणी सेंसस रो हैंडबुक तैयारी होची दैट इज सेकेंडरी तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन हला ताकू एनालाइज हला टैबुलर फॉर्म रे रिप्रेजेंट हला तापर गोटे बुक तैयारी हला दैट इज सेंसस बुक द सेंसस बुक इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड डाटा तो प्राइमरी सोर्स डाटा जो कलेक्शन हला दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा तो प्रथम जो तथ्य आम संग्रह कले दैट इज कॉल्ड फास्ट हैंड इनफॉरमेशन दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्राइमरी डाटा व्हाट आर द मेरिट्स एर सुविधा कौन प्राइमरी डाटा इट इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी माने शुद्धता अधिक जेहेतु आम डायरेक्ट कलेक्शन करछे फ्रॉम डोर टू डोर एतरे आदौ भूल भटका न थाए शुद्धता 100% शुद्ध माने 100% प्यूरिटी थाए सेकंड मेरिट कौन इट एक्सप्लेन्स द डाटा इन डिटेल आम जमी चाहिए जिते आम रेस्पोंडेंट पाक जाऊे आम डिटेल ताकू कलेक्शन करि परिबा आमर जो पर्पस अनुसार आम तथ्य डिटेल आनी परिबा किंतु सेकंड डाटा आम डिटेल पाई परिबानी कहीं आम जहाँ थी आम आनिबा किंतु एतरे होची इन डिटेल वी कलेक्ट द इनफॉरमेशन द थर्ड मेरिट इट एस्टाब्लिशेस पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड रेस्पोंडेंट जिते आम कौन सी लोक पाक जाऊे तथ्य संग्रह इट क्रिएट्स रिलेशनशिप कारण जब रिलेशनशिप आम डेभलप न हो आम ठीक तथ्य आनिबानी कारण जो लोक पाक जाऊे सी आम रिलेशन होगला आम कहवा जे बर्तमान यही पर्पस मुझे आसी मोर तथ्य ये दरकार या द्वारा यह माने तार रिजन भी कहीदेवा एवं तार पॉलिसी डिसीजन भी कहले से आहरी खुशी हे जहाँ यही तथ्य देवा द्वारा देशर विकास हो पार मोर डेभलपमेंट हम कि समाज डेभलपमेंट हो पार तेणु से खुशी रे तुमको बसई किसी खाया पीवाक दे तथ्य देव जदि आम हरिबुल मुड्रे जा जड़े ऑफिस जाऊँगी जा तथ्य मांग सी तुमको ठीक तथ्य देवनी कौन सी हरिबुल मुड्रे अच्छी कम करुँची से तथ्य देवनी तेणु माने वन शुड जज द माइंड ऑफ द रेस्पोंडेंट देन कलेक्ट द इनफॉरमेशन द थर्ड मेरिट इज ओवर द फोर्थ इज दिस डाटा आर मोर रिलायबल जो तथ्य आम आइले रिलायबल मीन्स माने आम पर बहुत विश्वास योग्य कारण जेहेतु आम कलेक्शन करचे निजे पर्सनली विजिट्स द रेस्पोंडेंट एंड कलेक्ट द इनफॉरमेशन सो इट इज मोर रिलायबल भूल भटका किसी रही एंड इट इज लेस बायस आज इट कलेक्टेड पर्सनली बायसनेस ना क्या द्वारा प्रभावित ना जेहेतु मु अन्य क्या द्वारा प्रभावित नुहे सीधा सड़क गली पर्सनल विजिट कली एवं तथ्य संग्रह कली सो इट इज लेस बायस सो आज इट इज कलेक्टेड पर्सनली दीज आर द मेरिट्स ऑफ प्राइमरी डाटा यार प्राइमरी डाटा ये सब रही सुविधा तो अनदर इज डिमेरिट्स व्हाट आर इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस समय लगे जेहेतु डोर टू डोर कलेक्शन होची इट विल टेक टाइम टू कलेक्ट द इनफॉरमेशन इट इज वन ऑफ द डिमेरिट इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली कारण ये आमको अधिक एक्सपेंसिव खर्च अधिक आम डोर टू डोर जाऊे आम कौन गले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आम माने खाइबा पीवा सबू माने आमको खर्च करा पड़ो तेणु इट इज एक्सपेंसिव एवं कॉस्टली आज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम डोर टू डोर जेहेतु आम प्रत्येक व्यक्ति पाक जाऊे प्रत्येक लोक ठारू माने तथ्य संग्रह करुचे आमको अधिक खर्चांतर अधिक माने व्यय सापेक्ष नेक्स्ट डिमेरिट इज थर्ड डिमेरिट इज इट नीड्स लॉट ऑफ लेबर एंड स्किल जेहेतु अधिक लेबर पावर दरकार जेहेतु तथ्य जमी आम कहे सेंसस डाटा कलेक्शन गोटे मैन पावर दरकार आम जेहेतु कलेक्शन करुचे डोर टू डोर आमको अधिक मैन पावर आवश्यकता रही स्किल्ड हवा दरकार जे इन्वेस्टिगेटर सब स्किल्ड unless the investigator is skilled the data will not be collected scientifically and properly so
it is one of the important skilled labor, and skilled manpower is essential for collection of the data. And lastly, it is not possible to collect the data in some investigation, so there is some little scope in some field data are not to be collected, for example defense. So, in defense, so data is a secret, one cannot collect the arms and ammunition data or any defense weapons. So, these data are confined to the government sector. So, government is the owner of data. If government needs that data is to be acquired, only government can safeguard its data. So, these are the merits and demerits of the private data collection. So, thank you all in cooperating me in this session. So, I hope you will be better understood in this session. Thank you all.